In this section, we are going to look the blood supply of the brain in a very simplified sketching manner, so that you can enjoy, you can draw, and you can make practice. Okay. So in our detailed class, we discussed this is our common carotid artery giving the external and internal carotid artery. Yes, sir. Here is our external carotid artery, and this is the internal carotid artery, which is passing through the our carotid canal and making C-shaped siphon inside the cavernous sinus. Here is our artery which is coming through the vertebra, that's our vertebral artery, inside reaching through the foramina magna, then meeting with the opposite side of the vertebral artery and making basilar artery. And here there is a formation of circle of Willis. So in a very simple way, short and sweet way, we are going to learn this our circle of Willis. Yes, in detail class, I told you this all the things, how these are making circle of Willis. So in this diagram we had seen there is the presence of our basilar artery, vertebral artery fusing together and making the basilar artery, and then here is a formation of the circle of Willis. This is our internal carotid artery. So the same diagram in easier way we are going to draw. Try to understand. Yes. Here are our right and the left vertebral artery. Both are uniting and making basilar artery. Yes. So this is our basilar artery. Then this basilar artery is dividing into the right and left posterior, yes, cerebral artery. तो सबसे पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी काफी सारी चीजें इजी हो जाएंगी. जस्ट मेकिंग लेबलिंग vertebral artery. Fine. Now try to understand. There is one another arterial system, internal carotid artery. Okay. Now we are going to draw the circle of Willis. See here. I for internal carotid artery. Anteriorly it is giving the branch. आगे की तरफ ब्रांच देगी, इसलिए इसका क्या नाम देंगे? Anterior cerebral artery. These two anterior cerebral artery, they are communicating together with the help of the anterior communicating artery, and this internal carotid artery is giving the branch posteriorly, that is our posterior communicating artery. Simple. So in this way you can see this circular anastomosis is our circle of Willis. Okay. फिर से. Yes. What are the 5 components of the circle of Willis? Magic of 5. This is our anterior communicating artery. Here is our anterior cerebral artery. Already the internal carotid artery is located here. पीछे की तरफ आते हैं तो posterior communicating artery और सबसे पीछे में posterior cerebral artery. So circle of Willis, cow. Yes, in a funny way I told you, when we were going to the school at the childhood, the cow essay was important. Okay. And again this cow essay, short note as well as long note, is very important. So this cow, circle of Willis, anteriorly formed by the anterior communicating artery, anterolaterally formed by the anterior cerebral artery, laterally formed by the internal carotid artery, posterolaterally formed by the posterior communicating artery, and posteriormost there is our posterior cerebral artery. So they are the 5 components. I told you the 5 branches of the internal carotid artery. What are the 5 branches? Yes. You have to make few more branches in this way. So this internal carotid artery is giving the 5 branches. What are the 5 branches? See here. First is anterior cerebral artery. Another is here our ophthalmic artery, artery to the eye. Very important. And then middle cerebral artery, very important question. And then here is our anterior choroidal artery, 4th artery. And then next is 5th posterior communicating artery. These yellow color structures are indicating the our 5 branches of the internal carotid artery. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Of which part? Cerebral part. And there are the different more branches from the vertebral artery. See here, vertebral artery की कौन-कौन सी branches थी? Yes,
it is giving the two branches which is uniting at the middle line. Anterior spinal artery, एक आर्टरी जो पीछे की तरफ चली जा रही है स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर रही है. पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंड देयर इज द मेडुलरी आर्टरी, मेनिंजियल आर्टरी, मेडुलरी आर्टरी, मेनिंजियल आर्टरी समझने के लिए. सो व्हाट आर द 5 ब्रांचेस ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी? मैंने आपको मैजिक ऑफ 5 बताया था. सो दिस इज द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, मेडुलरी आर्टरी, meningeal artery. Okay, so you can recall 1 2 3 4, and which artery is the fifth artery? Very important, pica artery. So there is our posterior inferior cerebellar artery. So 1 2 3 4 5, again 5 branches of the our vertebral artery. Then here is our basilar artery. Yes sir, this is basilar artery. What are the different branches of the basilar artery? हमने पाइका से कहानी खत्म की. I am using the blue color to understand, to differentiate. तो हम कहानी आइका से शुरू करेंगे. So this is supplying the our cerebellum from anterior inferior portion. So this is anterior inferior cerebellar artery. एक ब्रांच होती है जो cerebellum को ऊपर से सप्लाई करेगी. That's why this is our superior cerebellar artery. One artery will enter within the our internal acoustic meatus having the zigzag course known as labyrinthine artery, and minute, very minute branches are there at the basilar sulcus supplying the pons. So these are our pontine branches. तो यूजी लेवल से मैंने इजी करते हुए आप लोगों को ये ब्रांचेस बताई. जब हम पीजी लेवल में जाएंगे तो और भी इनके बारे में डिटेल देखेंगे. बट राइट नाउ यस, यू कैन सी 1 2 3 4 and the 5. These are the our branches of what? Basilar artery. So please go for the our detailed video about the blood supply of the brain, जिसमें हमने इन सारी चीजों को डिस्कस किया. ब्रेन के एस्पेक्ट में हमने डायग्राम बनाया था. ओके, सर्कल ऑफ विलिस को ड्रॉ किया था और मैजिक ऑफ 5 लिखा था. सारी चीजों के 5 ब्रांचेस होते हैं तो हमने टेबल बनाया था. एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द मेन आर्टरी ऑफ द ब्रेन, अक्का मक्का पक्का. एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इट इज सप्लाइंग विच एरिया? व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी? व्हाट आर द डीपर ब्रांचेस? Table also we had seen from our BD Chaurasiya sir textbook. Medial surface of the brain mainly supplied by the anterior cerebral artery. Where the posterior cerebral artery, medial cerebral artery, we had seen. What are the deep branches of the anterior cerebral artery? We had seen. And inferior surface of the brain, we had seen this all the things. फिर हमने क्लिनिकल देखा, सेरेब्रल एंजियोग्राफी के साथ इंटीग्रेट किया, और फिर होमनकुलस रिप्रेजेंटेशन भी देखा, और क्लिनिकल क्वेश्चन हमने ड्रॉ किए, समझे. फिर उसके बाद हमने ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ये भी देखा, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं कि एंटीरियर 2/3 को कौन सप्लाई करता है, पोस्टीरियर 1/3 को कौन सप्लाई करता है. और फिर क्लिनिकल के लिए हमने एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम देखा, और इसके बाद आर्टरी ऑफ एडम की विग्स, प्रॉपर नेट के रेफरेंस से हमने इन चीजों को देखा. और फिर वेनस ड्रेनेज को भी हमने ऑब्जर्व किया. बैटसन वेनस प्लक्सस की हमने बात की कि किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट रेक्टम, पेल्विक कैंसर हमारे वर्टिब्रा को स्प्रेड करता है. ये सारी चीजें हमने डिस्कस की. ओके, सो दिस ऑल द वीडियोस यू कैन गेट एट आवर ऐप. सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू. एनी मोर डाउट यू कैन आस्क right now. Thank you.